Today's cue card is describe a time you had a nightmare. If you're going to take exam in the month of April, May, June, July, August in 2021, then you might get this cue card on your test day. So let's begin. I'll also explain in Hindi so that I make sure that everybody understands each and every piece of language clearly. So let's begin. Describe a nightmare that you had. You should say when it was, what was a nightmare, how did you feel afterwards. When I was given 1 minute to prepare for this question, to be perfectly honest, I was struggling to choose one because there are numerous stories I could tell you, because I hardly ever get sweet dreams. Anyway, here I've chosen to talk about an incident that took place ages ago. As this cue card asks me when it was, well, I can't recall exactly because I have memory like a sieve. बहुत सारे क्यू कार्ड्स अक्सर मैं अपनी वीडियोस में इस तरीके से शुरू करता हूँ. When I was given 1 minute to prepare for this question, जैसे ही मुझे 1 मिनट दिया गया इस क्यू कार्ड को प्रिपेयर करने के लिए, आई वॉज स्ट्रगलिंग कि मैं स्ट्रगल कर रहा था कि मैं किस चीज़ की यहाँ पर बात करूँ, क्योंकि बहुत सारी सी स्टोरीज हैं. अक्सर होता है कि आपको ऐसे बहुत सारे ऐसे सपने आते हैं कि जो आपको अच्छे नहीं लगते हैं एंड यू कैन शेयर विद पीपल. ओके, सो आई वॉज स्ट्रगलिंग. न्यूमरस मीन्स बहुत सारे, सेवरल, हार्डली एवर. इफ यू हार्डली एवर डू समथिंग मीन्स आप कभी कभी करते हैं, बहुत कम. हार्डली एवर गेट मीन्स कभी कभी ऐसा होता है कि मुझे कुछ अच्छे सपने आ जाएं, sweet dreams. Anyway is a discourse marker. When you use this word, this means कि आप कहते हैं कि चलो पहले मैं जो भी बात कर रहा था, okay, anyway, अभी मैं पॉइंट पे आ रहा हूँ. Anyway, I've chosen present perfect. I've chosen, I have की contraction है, I've chosen ages ago. If something happened ages ago means बहुत साल पहले की बात है. As this cue card asks me, जैसे कि इस cue card के अंदर है, I have a memory like a sieve. If you have a memory like a sieve, this means कि आपकी memory अच्छी नहीं है. ਸਿਵ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਚਾਹ ਪਾਉਣੀ. ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਚਾਹ ਛਾਣਦੇ ਆ ਸੋ ਉਹ ਸਿਵ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਰਾਈਟ. ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਚਾਹ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੱਤੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ, ਹਲਕੀ ਜੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ. ਸੋ ਮੇਰੀ ਮੈਮਰੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਹੈ, मतलब मेरी मेमोरी चाह पानी वरकी है, राइट. आई हैव मेमोरी लाइक अ सिव. आई डोंट नो लाइक व्हाट टू से इन हिंदी में क्या कहते हैं, आई डोंट नो दैट. लेकिन पंजाबी आई एम श्योर, पंजाबी में श्योर हूँ, ठीक है. सो मेरी मेमोरी अच्छी नहीं है. आई हैव मेमोरी लाइक अ सिव. But I vaguely remember it was when I was preparing for a school comp, and it was a dance comp. It is believed that when you have something on your mind all day, especially before you sleep, you get almost a similar dream to your thoughts. That particular night, I had a dream that I wasn't allowed to participate in the function because my father was annoyed and he reprimanded me for participating. I vaguely remember. If you say that it's something that you vaguely remember, this means आपको हल्का सा याद है, आपको धुंधला धुंधला सा याद है. That you wanna say that कि आपको हल्का सा याद है कि जब मैं ABC स्कूल में पढ़ता होता था, so ABC मेरा दोस्त होता था. I vaguely remember. Comments में ज़रूर बताएं आपको हल्का सा कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपको याद है. I vaguely remember. और अगर आपको clearly याद है, so उसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं I vividly remember. और हल्का सा याद है I vaguely remember. Comp जो है competition को शॉर्ट में आप कॉम्प भी बोल सकते हैं. इट इज बिलीव्ड, यह माना जाता है, यह विश्वास किया जाता है. पैसिव है, इट इज बिलीव्ड. स्पेशली मीन्स खास तौर पर. आई वॉजंट अलाउड, पास्ट में पैसिव है. आई वॉजंट जो है वॉज नॉट की कंट्रैक्शन है, शॉर्ट फॉर्म है. आई वॉजंट अलाउड. वॉज अनोइड, अनोए मीन्स नाराज होना. मेरे फादर जो थे वो थोड़े नाराज हो गए. रेप्रीमेंड, इफ समबडी रेप्रीमेंड्स यू, दिस मीन्स कि वो आपको डांट लगा रहे हैं, आपको फटकार लगा रहे हैं, आपको डांट रहे हैं. सो माई फादर रेप्रीमेंडेड me. Unknowingly, I began crying at the top of my voice because I had been preparing for that competition for donkey's years. To be brutally honest, I was feeling like a fish out of water. Finally, it was the day of the function and I couldn't participate. Honestly saying, this was the first time I loathed my father. Sadly, one of my classmates won the first prize right in front of my eyes.
and I was so envious of him. Unknowingly means मुझे पता ही नहीं चला ये चीज़ कैसे हो गई, और मुझे पता ही नहीं था, मैं जानता ही नहीं था इस चीज़ के बारे में. Unknowingly, जैसे अगर आप कहें कि सर मैंने तो एग्ज़ाम नॉर्मली दिया था, unknowingly मेरे 9 बैंड कैसे आ गए, माई गॉड, मुझे तो पता ही नहीं चला, मुझे तो इस चीज़ के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी, कुछ भी नहीं पता था इस चीज़ के बारे में. Unknowingly, I had been preparing past perfect continuous. I was feeling like a fish out of water. When you say that you feel like a fish out of water, this means कि आप uncomfortable महसूस कर रहे थे बहुत ज़्यादा. Donkey's years. If something happens or something happened for donkey's years means बहुत सारे साल. Finally, that's a discourse marker. Finally, a loathed. If you loathe something, this means that you hate. आप बहुत ज़्यादा नफरत करते हैं. जैसे उदाहरण के तौर पर अगर मैं कहूँ कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है कि जब भी कोई झूठ बोलता है या जब भी कोई लेट आता है. I loathe when somebody comes late. I loathe. कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपको कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपको पसंद नहीं है. You loathe. Sadly, that's a discourse marker again. When you say sadly, this means कि उसके बाद ज़रूर आप कुछ ऐसा बोलने वाले हैं जिसको लेकर आप sad हैं. Right in front of my eyes means देखते ही देखते मेरी ठीक आंखों के सामने ही ऐसा हुआ. I was so envious. If you're envious of somebody, this means कि आप jealous आपने महसूस किया, jealous हैं आप. Envious. Thankfully, I woke up in the next morning and participated. As luck would have it, I won the comp and I was tremendously cheerful. As for how did I feel about this, it was an absolute nightmare experience for me that I've ever had in my life. Usually, I forget my dreams in the morning, but this is the one I can never forget. Thankfully, जब आप बोलते हैं कि my God, शुक्र है, पंजाबी च कहना है कि शुक्र है रब्बा आ चीज़ हो गई. Thankfully, you say that thankfully, okay? You say that कि मैंने ABC वीडियोस बहुत देखी, आपका वीडियो देखा, उसके बाद मैंने एग्ज़ाम दिया, मेरा बैंड स्कोर आ गया. Thankfully, I got my desired band score. Thankfully, शुक्र है. Thankfully. As luck would have it, by chance, as luck would have it, I was tremendously, means really, very cheerful, happy. Absolute nightmare experience. जब आप बोलते हैं it was an absolute nightmare experience means बिल्कुल पक्का ही ऐसा experience था, एक ऐसा nightmare था कि जो बहुत ही बुरा था. I've ever had कि जो ज़िंदगी में मैंने कभी महसूस नहीं किया. So this was our today's cue card. अगर आप ऑनलाइन IELTS क्लासेस लेना चाहते हैं या ऑफलाइन बठिंडा या मंडी डबवाली में ज्वाइन कर सकते हैं, मेरी पर्सनल क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं. My WhatsApp number is on the screen. Once again, thank you so much for watching this video. और अगला क्यू कार्ड कौन सा आप चाहते हैं मैं प्रिपेयर करूँ आपके लिए, so please tell me in the comments down below. Once again, thanks for watching.